so that we can have it. Floating point representation basically is what? Well, it was initially developed by IEE, and it was known as IEE 754. IE basically stands for Institute of Electric and Electronic Engineering. They're the one who did this, set this up. It was a representation of how decimal number system can be represented in binary form. Why was it important? It was important that अगर आप जाते हो कोई 4 decades back, the very early computers जो आपके पास थे, वो simple आपके real number, whole numbers को deal करते थे. They weren't able to do these decimal fraction computations. They weren't able to do that. In order for computers to deal with decimal points, floating point representation came into existence. It's for example, if you're writing what exactly you have to do at the speed of light, multiplied by 10 raised to the power 8. Okay, if you look at this, this is the speed of light, and if I would like to represent this, the speed of light, I could even write like this is 3.020000. One way. Sorry. Assumption. I'm not a physics person. Okay. I always give this example. Okay. Okay. Fine. What's the charge on an electron? 1.6. You're good. Well done. Hold on. मैं बताऊंगा. 10 raised to the power minus 18. Yes or no? यही होता है charge on an electron. See, I'm not bad. It should be superscript. Superscript. What is this? Anyway, let's go to bar. This is minus 18. Yeah, online क्यों नहीं कोई आया? अच्छा, can you assume that this minus 18 is a superscript? कहने का मकसद, why am I talking about all this? Point is मेरी बात सुनो. This is a very huge number, which means if I talk about this one, what I'm referring to is 0.0 zeros and 162. It's a huge number. Okay, even let's not even talk about that. For example, if I want to write is 128 in binary form, how do I write 128? I will write 128 as 0 1 0 0 0 0 0 0. Yes or no? You following me? I mean, at times when you have to represent some numbers, exponential figures हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. So instead of writing this way, if you would write it with the help of exponent, obviously it becomes easier and takes less space. It's easy for the computer to process. So writing through a floating point is better. For example, if I float this towards the right-hand side, 18 points, I will end up with this. Agree with me? When we talk about all this, in computers, we refer it to as this. In computers, we refer to this as plus, minus. We write capital M. Capital M is basically stands for the mantissa. We call it mantissa. And then we have B, capital B for the base. And then we have E for the exponent. Your exponent again could be positive value or a negative value. That's your mantissa. That's your base and exponent. Usually in the examination, they will tell you how many bits are allocated for the mantissa, how many bits are allocated for the exponent. For example, you could have a representation where you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4. So you have is a 12-bit representation of data in which 8 bits have been allocated to the mantissa and your 4 bits have been allocated to your exponent. वो इस तरह assume करें. अच्छा, ये तो हो गया. So the basic thing is how to convert it and all that. Magar, before I discuss all that, let me continue. You might have heard of flops. Flops basically stands for
per second. So आपने नोट किया होगा जब भी आप कोई कंप्यूटर खरीदते हो आपने प्रोसेसर में सुना होगा मेरा प्रोसेसर इज मल्टी थ्रेडिंग फाइन, इट हैज दिस L2 कैशे रैम फाइन, मगर एट द सेम टाइम इसके फ्लॉप्स कितने हैं, it's very important. Magar, the reason why we don't talk a lot about flops in our personal computers is because personal computers are not there to do scientific calculations, decoding of the DNA structure, modeling of the weather, and stuff like that, data collection, data modeling. When you have mainframe computers who will be doing this, unke floating point operations per second bahut zaruri hai. For example, you have a very sophisticated weather forecasting system that takes the data from the environment and records all that within database and needs to process it. All this data that has been taken from the environment is being processed, obviously has to be represented in floating point as well. So इसको operate करने के लिए you need to have a processor that has a lot of flops. The more flops you have, the more floating points operations can be done in a second, obviously it's better. Anyway, a general discussion that why are we studying floating point? Okay, right. So this is what all for floating point is. Let's talk about let's talk about some conversion, strictly come to conversion. Let's say we have to convert floating point representation into January. Give me just a few minutes. Let me create one for you. फिर आपको idea हो जाएगा. Let me see. Let's take an example of 16-bit. So 16-bit के लिए I can have 16, right? Okay. Now I need to have is the decimal, which I'll place over here. Control C, Control V. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 1 over here. I'll just tell you why and what am I doing. So बिल्कुल करता है, मगर वो फिक्स्ड है, ये फ्लोटिंग है. I'll tell you why. उसको फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. You can't float it here and there. इसको you can float it. Let's say I'm talking about this number 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, and then we can have is 0, 0, 0, 0, 1, 1. Okay, now you have a question that comes in that you have is your 16 bits are basically for the mantissa, and 10 bits are for the mantissa, and your 6 bits are for your exponent. Now what do you mean by that? आप नोट करोगे, मैं ये कह रहा हूं कि if I am referring to this from here to here, this is my mantissa M, or from here to here, this particular part is my exponent. I'll just show you one of the past questions जिस तरह का डिटेल में इसकी डिस्कशन बहुत आगे चली जाती है, मगर ए लेवल में रहने के लिए we'll just stick to this. Floating point representation काफी एडवांस में पढ़ोगे when you go to university. There's a lot more detail than this. मगर हमने remain रहना है इस लिमिट में. So this is the question आपका आया कि where the examiner says that your 10 bits are for the mantissa and your 6 bits are for the exponent, you're supposed to find the denary value of this. इसको denary value में convert करो. इसके conversion का एक method है. 1, 2, 3, 4, 5. नहीं, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये इधर नहीं आएगा, ये इधर आएगा. अब सही है. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
सॉरी जी, वॉल्यूम करते हैं। अब इसको कन्वर्ट करने के स्टेप्स हैं। हाउ डू यू डू दैट? Step one. The step one that you have to do is you need to convert your exponent into a denary form. Convert the exponent into a denary equivalent, into a denary number. And that would be what? If I do that, where will I end? Amna, अगर मैं इसको convert करता हूँ, let me press shift. ये है मेरा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नॉट नहीं कर सकता। ये अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग पहले। हाँ, आपको टू कॉम्प्लीमेंट्स याद है? डू यू रिमेंबर दैट व्हाट डज जीरो रिप्रेजेंट? दैट्स अ पॉजिटिव नंबर। व्हाट डज आवर वन रिप्रेजेंट? इट्स अ नेगेटिव नंबर। डू यू रिमेंबर दिस पॉइंट? टू कॉम्प्लीमेंट में डिस्कस किया था हमने ये। यस, ओके। साइन बिट जो आपकी है वो क्या होगी? ओके, सो इफ इट्स जीरो, दिस मींस ये जो मेरा एक्सपोनेंट है, माय एक्सपोनेंट इज व्हाट? पॉजिटिव और नेगेटिव? Because it's starting from zero. It's a positive exponent. My mantissa is what? Positive. If this was 1, this would have been a negative mantissa. Okay? Okay, when I talk about mantissa is like 10 raised to power 10 raised to power 4. 10 is the mantissa, na? 10 raised to power minus 4. Minus 4 is exponent. You're following me? 10 is the mantissa. अच्छा, तो जब मैंने बात की थी लाइक फॉर एग्जांपल द स्पीड ऑफ नहीं, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, we had minus 18. What does minus 18 basically represent with reference to the decimal? Okay, 1.6 multiplied by 10 raised to power minus 16. Hamna beta, what does it mean? That the floating point, will it move towards the right or the left in case of minus 18? Towards the left. It will float 18 points towards the left. And if it's a positive number, where will my decimal float? It will float towards the right hand side. Excellent. तो आपने ज़हन में ये बात रखनी है कि पहली बात तो ये कि जो आपका एक्सपोनेंट है, if your exponent is 0, this means your floating point will float towards the right. If your exponent is negative, your floating point will float towards the left. पहले तो ये नोट डाउन करो. You have to remember this. You get my picture? मैं क्या कह रहा हूँ? आमना, है ना? बात समझ आइए ना? तो फ्लोटिंग पॉइंट ने कहां फ्लोट करना है, डिटरमाइन करेगा उसका पहला जो बिट है। इसको जो कहते थे हमने, डू यू रिमेंबर व्हाट वी यूज्ड टू कॉल इट? साइन एंड मैग्नीट्यूड। रिमेंबर साइन एंड मैग्नीट्यूड क्या होता है? कि द साइन एंड मैग्नीट्यूड क्या होता है? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? एंड साइन मैग्नीट्यूड में ये था कि प्लस क्या होता है, जीरो क्या होता है, राइट? फाइन, सो यू नोटेड दिस। अब इसको हम ऐसे से कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है, यू आंसर when you can. So this means इसमें आज मेरी एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है वो क्या है? इफ आई एक डेनरी में कन्वर्ट करता हूँ, 1 2 3, मैं क्या कह रहा हूँ, सॉरी, 1 2 4 8 16 नहीं 1, हाँ, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी डेनरी की? तो मैं पूछ रहा हूँ, what will be the denary value of this then? 3, exactly, very well done. So the exponent value is what? It's 3. Yes or no? So I can refer to this as that E is basically 3. Yes or no? Exponent मेरा निकला है कि नहीं निकला? Exponent मेरा निकला है. Okay, fine. Now the rule basically says that I convert the exponent to denary value and I will be able to get 3. Now what you need to do is step 2. Once you get the value of the exponent, this will help you to determine that the floating point will go where.
तो अगर मेरा एक्सपोनेंट 3 मैंने भी आपको बताया था 3 पॉजिटिव है तो मेरा जो डॉट है इट शुड बी डूइंग व्हाट सेकंड स्टेप इट शुड float 1 float 2 float 3 and I come here yes or no देखो मैं हम ना बेटा मैं नंबर सिस्टम को नहीं कर रहा मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं बाइनरी में फ्लोट कर रहा हूँ डेसिमल मैंने करके देखा है 6.02 होगा तो मैं इसको फ्लोट कर दूंगा नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हाउ डू वी डू इन बाइनरी आई एम रिफरिंग टू दैट सो I told you the first step is first of all you have to see आपका exponent कितना है. Obviously अगर exponent अच्छा पहली बात ये है कि जो आपका floating point representation है maybe let me talk about that. I'm sorry I'm coming to a question. Let me just clarify one thing. That your floating point representation will always be in this form. You will always have a decimal point and then one sign and magnitude. And then for the mantissa, the same thing. You will have a decimal and a sign bit. So sign bit, it will always be like this. Your decimal has to be placed over here. Ye baat confirm hai. You get my point? And this process is known as normalization. You get my point? अच्छा आपने बेटा आप मेरे से कुछ वन की बात करी साइन बिट की अगर साइन बिट मेरा वन होता एक्सपोनेंट का मैं भी उस तरफ नहीं है एग्जांपल करेंगे अगर मेरा साइन बिट वन होता तो इसका मतलब ये होता -3 और अगर ये -3 होता तो आई वुड हैव नॉट फ्लोटेड टुवर्ड्स द राइट आई वुड हैव फ्लोटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट बट इफ आई वुड हैव फ्लोटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट इट वुड हैव बीन अ वेरी स्मॉल नंबर 0.001256 ऐसा कुछ बन जाता ये बात समझ आ रही है मैं भी वो नहीं कर रहा कि वो फिर तो ये भी नेगेटिव होगा ठीक है ये भी नेगेटिव होगा विल डिस्कस इट मैं स्टेप बाय स्टेप आ गया हूं उसको भी डिस्कस करेंगे अब तो फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कवर किया कि व्हाट आई नीड टू डू इज वी नीड टू फाइंड आउट इज माय एक्सपोनेंट की डेरिवेटिव वैल्यू क्या मेरी निकले यस जी बिल्कुल जी बिल्कुल एक्सेलेंट वही निकालने लगे बस अभी पता चल जाएगा आपको तो मैंने आपका स्टेप 2 ये है कि मूव द नो नॉट मूव आई विल नॉट यूज द वर्ड मूव float the decimal point towards as per the value मतलब ये है कि if it's a positive value and 3 value है तो I will float it 3 times. If it's a -3 I will float it 3 times but towards the left. If it's 8 value तो मैं 8 बार करूंगा आगे so on and so जो भी होगा मैं फ्लोट करना है तो एक्सपोनेंट के बेसिस पे अगर मैं फ्लोट करता हूं तो ये हो गया 1 2 and 3 so second step में I land up over here with this yes or no and हम ना बेटा now if I put this in my conversion grid what do I get मेरे पास क्या है डेटा अब देखो बेटा इसको अगर मैं इस डेटा को दोबारा लिखता हूं मेरे पास क्या है मेरे पास है 0 1 1 0 dot 1 I have this forget about the exponent please forget about the exponent right now मैं mantissa की बात कर रहा हूं is this not the final mantissa I have right now magar this is not my denary value how do I convert this into a denary value if I put this into a conversion grid I wish I could समझ आ जाएगी क्यों आपको ऐसा नहीं है मैं यहाँ कर देता हूँ आप इसी को समझो ये जो है ना बेसिकली दिस इज डेसिमल किस तरफ है ना दिस इज हाफ दिस इज 1/4 दिस इज 1/8 दिस इज 1/16 this is 1 this is 2 this is 4 this is 8 yes or no so on and so मतलब decimal के if you go on the left hand side so obviously your values increase this way and if you go on this side and this is how your values are represented because they are in decimal
0.5 is represented as 1 over 2, 0.025 is represented 1 over 4, 0.125 is represented as 1 over 8, और 125 का हाफ होता है 0.625, 0.0625, 0.0625 is represented as 1 over 16. Yes or no? You get my picture. Remember one thing, calculator is not allowed. तो ये आपको याद करना पड़ेगा. Calculators are not allowed in people. तो मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएंगे. बड़ा आसान है. मैं याद रहेंगे ना? ठीक है. बड़ा सा 50 का हाफ क्या होता है 25. तो 0.5 दूसरा सोचो ना. 25 का हाफ क्या होता है 12.5. 12.5 का हाफ क्या होता है 6.25. मगर उस पर एक जीरो डाल दो and so on and so. Okay. Anyway, अब where are we right now? अच्छा बोलो. वो तो बेटा बहुत बड़ी वैल्यू है. हो भी सकता है मगर भी हुआ है. पास्ट में इतनी वैल्यू आई. हो सकता है. वी शुड प्रैक्टिस एंड रिव्यू. हाँ नहीं नहीं आएगा. पता है क्यों? कैलकुलेटर नॉट अलाउड. इट्स नॉट फेयर. मतलब हाउ कैन यू डू इट? नहीं शॉर्टकट नहीं बेटा. इसमें शॉर्टकट क्या हो सकता है? हाउ कैन आई? मतलब मैं एक लिमिट तक याद कर कैलकुलेट कर सकता हूँ उसको मेंटल मैथ्स में. वो मैथ्स का पेपर तो नहीं है. वी शुड नॉट आस्क दिस. we will try to take it till 6th and 6th तक. उससे ज्यादा नहीं. जी बेटा. हाँ हमने मेंटिसा को देख के करना नहीं. जी बिल्कुल कर दिया. नहीं आपने पहले मेंटिसा को देखा. आपने द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू फाइंड सॉरी यू हैव टू लुक एट द एक्सपोनेंट. पहले एक्सपोनेंट को ढूंढो. एक्सपोनेंट का आप साइन एंड मैग्नीट्यूड देखो. Look at the sign and magnitude of the exponent. You should know the value of the exponent. Second step is if you know the sign and magnitude and the value of the exponent, upon that you move your decimal towards the left or the right. ठीक है. फिर मैं कह रहा हूं बिल्कुल ही हो सकता है. If this 0 was 1, this would have been a negative. जी बिल्कुल देखते हैं. जी जी बिल्कुल. जी हाँ नहीं मूव होना तो एक्सपोनेंट पे डिपेंडेंट है. वो मेंटिसा की बात कर रहे हैं. हाँ जी बिल्कुल सही पे जाएगा. ये हम डिस्कस करेंगे मगर मैं अभी फिलहाल लेट्स स्टिक टू दिस क्योंकि फिर वो आई डोंट वांट कंफ्यूजन टू बी देयर. वी कैन हैव वी कैन टॉक आज ही क्लास में नहीं. फिर किसी क्लास में वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल पॉजिटिव मेंटिसा, नेगेटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव मेंटिसा, वाइस वर्सा. चारों कॉम्बिनेशन करके देख लेंगे. विल डू इट. ओके. अच्छा अब अगला स्टेप देखो आमना. सो इफ आई लुक एट द डायनरी वैल्यू, I'll give you some time. Please think over it. You can. मुझे आप मेंटिसा की डायनरी वैल्यू बता सकते हो? Excellent. हमना, you done this before? नहीं किया पहले? Very good. 6.5. आपने एकदम में निकाल दिया. That's it. तो इसके फाइनल आंसर क्या हुआ? इसका फाइनल आंसर हुआ into 2 raised power 3. ये इसका आंसर. वैसे ये नहीं सॉरी ये पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है. आप 6.5 भी लिख दो तो आंसर सही है. यू डोंट हैव टू राइट. 6.5 पता नहीं एक्स्ट्रा है ना. बस ठीक है. क्या कहां से बेटा? अब डेसिमल 2 बेस पे है बेटा. सॉरी जो बाइनरी सिस्टम है. डेसिमल नहीं बाइनरी सिस्टम 2 पे है ना. वो पूछेंगे नहीं आपको यूनिवर्सिटी में. आपका सिर्फ बाइनरी कन्वर्ट की बात होगी. दैट्स इट. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू दिस. मैंने कहा ना ये बहुत लंबा टॉपिक है. दैट कैन बी डिस्कस्ड इन अ लॉट मोर डिटेल. और कंप्यूटर साइंस के आपके थर्ड ईयर में आपको बहुत बुरा चैप्टर लगेगा. फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता. Your father can probably help you done this. Okay, anyway, is this clear how to do it? आमना फिलहाल ये बेसिक क्लैरिटी हुई है कि हाउ
Have we done this? एक बार सोचो हमने क्या क्या स्टेप किया. Well, the first step is you need to find the exponent. You need to find the Danry value of exponent. It's sign and magnitude. जब वो निकल आए आप जाओ मेंटिसा पे और मेंटिसा के फ्लोट पॉइंट को उतना ही मूव करो जितना वो है. वो मूव करने के बाद जहां डेसिमल है उससे आप वैल्यू ड्राइव करो एंड यू गेट द आंसर. क्या? नहीं नहीं, मैंने डैनरी में कन्वर्ट किया बेटा 6.5. अच्छा इसको छोड़, मैंने मैंने जो क्वेश्चन था उसका आंसर दे दो. 6.5 दैट्स इट. हाँ नहीं, बाइनरी में क्या है तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करनी है ना. मतलब शुरू में ये नहीं था, मैंने आपको दिया था. डिडंट हैव आई हैव दिस. बाइनरी में ही है, फ्लोटिंग पॉइंट है ना. डेसिमल डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया मैंने इसको. मैंने फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में ही होता है ऑब्वियसली. और हम सीख के रहे हैं. मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था. व्हाट आर वी स्टडिंग राइट नाउ? वी आर स्टडिंग इज, मैंने इसलिए आपसे डिस्कस किया था चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हम किस तरह लिखते हैं डेसिमल में, नंबर सिस्टम में हम किस तरह लिखते हैं. तो वहां हम आराम से वी कैन फ्लोट. हम उसको प्रिसिशन के लिए कभी यहाँ ले जाते हैं कभी यहाँ ले जाते हैं. What do we do in binary system? How do we float it here and there? That's how we float it. This is why we call it floating point representation in computer systems in decimals, in binary. You get my point? मैं बहुत ये बात सुनो. ये एग्जांपल्स अभी मैं काफी डिस्कस करूँ. मेरे प्रेजेंटेशन है उसमें काफी है. बल्कि पहले वो कर लेते हैं. यू राइट. लेट्स डू दैट. मेरे नोट्स में पढ़े हुए हैं, उसमें काफी एग्जांपल्स हैं क्योंकि आई नीड टू डिस्कस समथिंग एल्स एज वेल. आप यहाँ से डाउनलोड कर लिया करो P3 के नोट्स में, P2 के नोट्स में. यू कम इनटू P3 नोट्स. यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा. अच्छा पासवर्ड. अच्छा फ्री में कुछ भी नहीं रखा हुआ मैंने. इनकरेक्ट पासवर्ड. सो P3 फ्लोटिंग पॉइंट वैसे मॉडल लेयर्स बेटा आप यहाँ से देख लेना. मैं आपसे वीडियो शेयर करता हूँ. आज हमने ये डिस्कस करना है, कंप्यूटर नेटवर्क डिस्कस करना है और पेपर भी करना था. क्या कर लें? चलो देखते हैं, जितना डाइजेस्ट कर ले उतना करेंगे. ठीक है. ओके लेट्स स्टार्ट. So what we have is this. Okay, right. I've talked about this. मैं ये बात data types last time primitive वगैरह data types बात कर ली थी हमने. You know this. Please you can go through it yourself. We have discussed this. Anyway. Representing positive negative numbers. We talked about this. You know it. Conversions of पाती. It's just a recap. क्योंकि if you have forgotten all this, तो आपको revise करना चाहिए. Binary to binary आपको याद है. Sign and magnitude to complement याद है. आपको याद है टू कॉम्प्लीमेंट कैसा करते हैं ना. ठीक है. बट डिफरेंट इवन हेक्साडेसिमल को डेनरी के भी डिफरेंट तरीके हैं बहुत सारे. मगर जो तरीका मैंने बताया काफी आसान है. व्हाट इज वन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इनवर्स कर दो नंबर्स को, डिजिट्स को. जीरोस को वन कर दो, वन को जीरो कर दो. और टू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आई एड वन टू इट, देन यू विल गेट टू कॉम्प्लीमेंट. मैं बता दूं एक सेकंड में. ये देखो तुमने उससे ही करना है. अच्छा बस ठीक है रहने दो. तुम्हें कौन सा याद है टू कॉम्प्लीमेंट? जो भी ठीक है सही होना चाहिए. मैथड डिफरेंस है, डिफरेंट है. हाँ वो भी है. ठीक है वो भी ठीक है, वो भी ठीक है. स्टिक टू दैट. जो आपने सीखा हुआ है घर में ला दो. जो हाँ ला दो. जो तुमने स्टिक किया हुआ है स्टिक टू दैट. फिर मैं ना रहने दो. वो फिर एग्जाम में बंदा कंफ्यूज होता है. वो यूज करो वो यूज करो फिर काम खराब होता है. जो चीज समझ आ गई बस ठीक है रहने दो. तो टू कॉम्प्लीमेंट हो गया. लेट मी गो अहेड. मैं सारा स्किप कर रहा हूँ. सब्ट्रैक्शन में भी वही फिर आपको कंफ्यूजन है. सब्ट्रैक्शन का पता है ना. एडिशन का पता है ना. एडिशन का नहीं पता. अच्छा फिर कभी डिस्कस करने चीजें.
वो फिर ये वी विल डिस्कस इट, एडिशन सब्ट्रैक्शन विल डू इट, ओके। आप सही कह रहे हो, अगर वो आना चाहिए तो if we talked about this, that's why we're doing it. So that's your mantissa and that's your exponent. The dot was supposed to be here as well, okay? So obviously मैं डिस्कस कर लिया, जीरो होगा तो आपका mantissa exponent. Okay, so if the sign bit, this sign bit was one, you're expecting negative number. If it was zero, you're expecting a positive number. पता आपको बात का, ये बात भूलनी नहीं है. You know that. Invertible decimal number. ये let's talk about another example. बल्कि मैं छुपा नहीं सकता, आपसे दिखाऊं. अच्छा, let's have a look at it. Another example. 16 bit ये है. So first of all, calculate the exponent, which is equal to 2. If it's equal to 2, and if it's a positive exponent, what happens to the mantissa? I did not make the dot over here, but there's supposed to be dot over here. Decimal. There's supposed to be decimal over here. Both the exponent and both the mantissa, they have a sign bit. Remember, a sign bit for the, this is a sign bit for the exponent. This is a sign bit for the mantissa. हाँ, या ये गलती टाइप हो, माइनस टू नहीं. ये अगर वो होता फिर वन होता. हाँ, नहीं माइनस में 32 है. माइनस मैंने क्यों लिखा? नहीं माइनस नहीं, इट्स नॉट. अगर हमारा यहाँ वन होता ना हमारा, तो हमारी वैल्यू हो जाती नहीं नहीं नहीं, टोटल वैल्यू जो भी निकलती ना वो नेगेटिव में हो जाती. जी, वन होता, माइनस देता, मगर इतना लंबा आपको नहीं देंगे ना, वो तो फिर बहुत लंबा होता. ये ज्यादातर एग्जाम्स में 2 3 4 तक ही रहता है, ज्यादातर 5 तक भी गया. नहीं, हमने 16 बिट यूज किया ना, 1 2 3 4 5 6. अगर मेरा ये वन होता ना, that would have been the sign bit of my exponent. नहीं नहीं, ओह, वो कह रही है कि अगर लेट्स से अगर ये वन होता, वन होता, हाँ, अगर ये वन होता, यस. क्या? वेरी गुड. लिंक क्यों नहीं चलता? रिकॉर्डिंग भी हो रही है. मेरा एक सेकंड. बेटा मैं एंड करके दोबारा करूँ शुरू, इनको